Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well and great. First of all, I want to say thanks to those people who really support me on my very first video and show kindness. So as I told you in my last video, we will discuss about early life of chemistry. So let's start it. As everybody know, chemistry is interesting and challenging subject. So जैसे chemistry एक interesting और challenging subject है, उसी तरह इसकी history भी बहुत ज़्यादा interesting और challenging है. साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा contributions की इसकी chemistry को develop करने में. जैसे कि स्टार्टिंग में कोई ख़ास मेथड नहीं थे, कोई भी किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम आइन को कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया था. इसी तरह साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस के बाद बहुत से केमिकल्स को डिस्कवर किया. जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हें एक ख़ास नेम दिया गया और जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई, केमिस्ट्री भी उसी तरह डेवलप होती गई. सो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस क्या थी और किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे क्या क्या डिस्कवर किया, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी. उनकी बेसिक हिस्ट्री बताऊंगी आपको. सो लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट साइंटिस्ट इज़ रॉबर्ट बॉयल. इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो साइड पे आपको एक पिक्चर में मिल जाएगी और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके बता दूँगी. सो रॉबर्ट विलियम बॉयल भी इन्हें कहा जाता है. So he was born in 1627 to 1691. He is a first modern chemist. ये पहले modern chemist थे. He is not only a chemist but also a physicist, philosopher, natural philosopher and alchemist थे. He began his research on chemistry. इन्होंने chemistry में अपनी research की and developed basic ideas for the behavior of gases. Basic idea for behavior of gases. जैसे कि हमने 9th क्लास में बॉयल लॉ पढ़ा था, उसमें जो वॉल्यूम था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. वॉल्यूम जैसे कि इन्होंने रॉबर्ट बॉयल लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें वॉल्यूम जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के. वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/p के. जब हम कंडीशन क्या अप्लाई करते थे, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के. इट मींस दैट वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा. इट इज़ वाइस वर्सा. एंड देन ही आल्सो गिव एन आइडिया अबाउट दैट स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं जब कंबाइन करते हैं तो वो एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. इनके फिर इस आइडिया को जॉन डाल्टन ने यूज़ कर लिया था और उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था. And then the second scientist is Joseph Priestley. Joseph Priestley. He was born in 1733 to 1804. He is not only an English chemist but he also a natural philosopher and liberal political theorist. He is a multi-subject educator. He published 150 plus works in his lifetime. In his lifetime he discovered oxygen. And how he discovered oxygen, इन्होंने ऑक्सीजन को इस तरह डिस्कवर किया था जब इन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड अपने एक एक्सपेरिमेंट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मर्क्यूरिक ऑक्साइड की थर्मल डिकम्पोजिशन की थी. डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड mercuric oxide and he get air bubbles और उन्होंने उन एयर बबल्स को डाइफ्रोजिस्टिकेटेड एयर का नाम दिया गया था, जो बाद में ऑक्सीजन के नाम से जानी जाती थी. डाइफ्लोजिस्टिकेटेड एयर and later he known as oxygen. And later he discovered many other gases like ammonia, NH3, carbon monoxide, nitrous oxide, nitric oxide and sulfur dioxide, SO2, and the last one is
he discovered these other gases also, and he also discovered the carbon cycle. So इन्हें एक नोबल प्राइज से इन्हें एक नोबल प्राइज दिया गया in 1772. And after that, a scientist C.W. Shelley. He was born in 1742 to 1786. He is a Swedish German pharmaceutical chemist, and he discovered chlorine, manganese, and barium, uh, tungsten, barium, chlorine, manganese. He also discovered some organic acid like organic acid. इन्होंने जो discovered किए थे वो थे tartaric acid, lactic acid, oxalic acid, and arsenic. Lactic acid, arsenic, and oxalic acid, etc. इनकी डिस्कवरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ जाते हैं. एंड आफ्टर दैट अ केमिस्ट एंटोइन लेवोइजियर. He was born in 1743 to 1794. He is a French Nobel chemist, and he discovered nitrogen, and he was also a father of chemistry. And he was known for acid-base combustion, calorimetry, carbon cycle, redox reaction, stoichiometry, law of conservation of mass, and thermochemistry. जाहिर सी बात है, जब इन्होंने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट फॉर्म किए थे तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. सो हिज कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री इन acid-base combustion, calorimetry, and stoichiometry, chemistry, law of mass of conservation, and thermochemistry, redox reaction, carbon cycle. सो ये इनकी केमिस्ट्री की फील्ड में कंट्रीब्यूशन थी. इसके अलावा ही वाज अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. सो दैट्स व्हाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ बायोलॉजी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एलेक्जेंड्रो वोल्टा. Alessandro Volta. He was born in 1745 to 1827, and इनकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थी. इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की. इलेक्ट्रिक सेल की इन्वेंशन की इन्होंने. इनके दोस्त यू कैन से कि इनके दो साथी थे, डेवी एंड फ्रेडी, जिन्होंने इनके साथ वर्क किया और बैटरी को प्रोड्यूस किया एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ डेवी एंड फैराडे. हमने फैराडे लॉ भी पढ़ा हुआ है. बैटरीज प्रोड्यूस बैटरीज एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इनकी जो इन्वेंशन थी, invention of electric cell. And after that, a chemist Johann Dalton. He was born in 1766 to 1844. इन्होंने रॉबर्ट बॉयल के आइडिया को यूज़ करके एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवर किया था, एटॉमिक थ्योरी का आइडिया दिया था. Johann Dalton, he gave
he gave an idea about atomic theory. He was an English chemist and materialist. And after that, a chemist, Amado Avogadro. Amado Avogadro. He was born in 1776 to 1856. 1856, and he gave an idea about quantitative approach in which we can calculate number of particles of ions, atoms, and molecules, and he gave a value of 6.02 cross 10, 10 to raised to power 23. And after that, a chemist, an American chemist, Charles Goodyear, 1800 to 1860. Charles Goodyear. He was born in 1800, and in the mid of 18 he discovered vulcanization of rubber. इनकी discoveries theme about vulcanization of rubber. And after that, a chemist, Louis Pasteur, in 1822 to 1895. (1800 to 1895). He's a French chemist and microbiologist. He discovered the principle of vaccination. He saved beer, wine, silk industries in the France, and developed vaccines against anthrax and rabies. Vaccine against he is a modern founder of bacteriology, and is also called father of bacteriology, and he's also father of microbiology. Father of microbiology. Because he was the first demonstrate infection disease are caused by microbes. And after that, a scientist, Alfred Nobel, was born in 1832 to 1896, a Swedish chemist, and he invented dynamite. Dynamite is invented by Alfred Nobel, and he held 355 patients in his lifetime. And dynamite mean a safer and easier mean of harnessing the explosive power of nitroglycerin. And after his death, the fortune he made from his product was used to fund the Nobel Prizes in the sciences. And after that, a scientist, J.W. हेट है या जो भी है, in 1837 to 1920 he developed first plastic in his discovery. And after that, Sir William Crookes, a scientist, he performed an experiment in 1895 related to spectroscopy. Then a scientist, Goldstein in 1886. In 1886, जिनको इन्होंने प्रोटॉन्स का नेम दिया था, प्रोटॉन्स. And after that, J.J. Thomson, 1856 to 1940. J.J. Thomson, 1856 to 1940, he discovered negatively charged particles.
and he named it as electrons. And he called it fundamental particles of matter. And in 1906 he won a Nobel Prize in physics on the discovery of fundamental particles of matter. And in 1932 James Chadwick produced electrically neutral particles, called them neutrons. And he gave an equation in which neutrons are produced is as 9 4 2 helium plus helium 4 2. He gave this equation, and then a British chemist Rutherford he won a Nobel Prize in 1908 in chemistry, and in 1911 he proposed his nuclear model of atoms, in which he presented first experiment of splitness of atoms. That is why he was also called as father of nuclear science. And in 1912 Neil Bohr joined Rutherford in 1912, and in 1913 he proposed his own atomic model based upon quantum theory. So the Rutherford ने जो दी थी वो classical theory दी थी that is related to splitness of atoms and nuclear model. Then Neil Bohr ने जो थी वो quantum theory दी थी, क्वांटम बेस पे इन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था. सो दीज आर द साइंटिस्ट जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दी थी एंड डिफरेंट डिस्कवरीज की थी. होप सो दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, and keep supporting my channel and don't forget to subscribe. Allah Hafiz.